Hello, everyone. Welcome to session 2 of the Value Education based series. I'm your trainer. My name is Prashant Stephens, and it gives me a real privilege to talk about the Value Education based session 2, which I'm going to proceed. मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं ये सेशन ले रहा हूँ और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये सेशंस काफ़ी पसंद आ रहे हैं और इससे आपके लाइफ में काफ़ी एक बदलाव और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सो हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। टुडेज सेशन इज गोना बी ऑन वर्क एथिक्स एंड सोशल वैल्यूज। इसको सुनते ही आपके मन में काफ़ी सारी चीज़ें आती होंगी कि ये वर्क एथिक्स और सोशल वैल्यूज क्या है, right? So let's move into this subject and we are going to understand what exactly this means. So today's agenda is going to be, or before we move into today's agenda, I have a small puzzle for you. Can you solve this puzzle? Okay, it's an interesting puzzle. Let's see. Now I will read it. The image talks a lot about what the puzzle is going to be, but just for your understanding, I'm going to read this puzzle for you. You can't touch it, but it affects your feel. You can't see it, but it's there when you look at yourself in the mirror. You can't hear it, but it's there every time you talk about yourself. What is this important but mysterious thing? So any guesses, students? आप कुछ guess करना चाहते हो? Can you please guess it, what it exactly means? Can you guess that one word which I'm talking about? Okay, so without wasting your time, I know most of you might have guessed it right, but yes, here is the answer. The answer is self-esteem. That's the thing that I'm talking about. Self-esteem. The word self means about yourself, and esteem means the pride, the honor, the privilege that you have in you, right? Everyone loves themselves. Everyone, likes, or rather they know their likes and dislikes. But self-esteem is something very different. Self-esteem is all about your own belief in yourself. It is talking about your own, faith, your value system that you have in yourself, right? So that is what self-esteem means. How does self-esteem play a crucial role in your career development? हमारे करियर की डेवलपमेंट में, करियर एवरीवन नोज कि हमें सबको जॉब करनी है, वी वांट टू वर्क, वी वांट टू अचीव सम success in our life, to earn money, to earn fame, respect in the society. And believe me, other than knowledge that you have gained, your qualifications, your technical expertise, your self-belief is one of the most important factor that drives you. It is rightly said that self-confidence is one of the most important factor which helps you to achieve the success in your life. Don't you think that? You might have heard that many times you think that I don't have the self-confidence, I lack self-confidence, I cannot speak good English, मैं English अच्छे से बात नहीं कर सकता. But do you feel like that's the only thing that is stopping you? It acts like a hurdle in your growth, in your success. Then guys, this time you need to really think about yourself. This time you really need to dive into what exactly is there in me which can really help me or motivate me to go ahead in my life. Okay, so yes, self-esteem plays a vital role, undoubtedly, and I have some examples to share with you. Now, can you guess these personalities, very famous personalities? Without their introduction, they don't need introduction rather. One is Sachin Tendulkar, Vidya Balan, and the third one is the famous Hollywood actor, the American actor, Leonardo DiCaprio. Everyone knows him, or these celebrities. But do you think what's common in them? Can you guess some common factors? No, you might see Sir Sachin Tendulkar is a cricketer. Both of them, they are actors. What's common in them? Yeah, one thing is common, that they are all celebrities. That's fine. But there is one thing which is really common, is that they all of, like, unlike other celebrities, like
even other celebrities would also have gone through the same, but I have just chosen these few. They have also gone through the thick and thins of their life. That means उन्होंने भी अपने लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है, क्रिटिक्स को फेस किया है, लोगों की बातों को फेस किया है. फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने अपने करियर के एक लाइफ में एक ऐसा उनके मोड़ आया जब इंडिया 1999 वर्ल्ड कप जब हार के आया. व्हेन इंडिया लॉस्ट द 1999 वर्ल्ड कप, इंडियन टीम हैड gone through a very difficult phase, and Sachin himself said in one of his biography that he was almost on a verge to put down his papers. He was almost on a verge to resign from cricket. क्रिकेट को वो छोड़ना चाहते थे. ऑल्दो ये उनकी दिली ख्वाहिश नहीं थी. क्रिकेट को वो अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते हैं. क्रिकेट उनके लिए सब कुछ है. उन्होंने क्रिकेट के लिए काफी सैक्रिफाइसेस किए, अपने पर्सनल पेन्स सब कुछ त्याग करके उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया है. बट इसके बावजूद भी उनके लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आई है. He had to go through a lot of difficult times. So you can just think like cricketer Sachin Tendulkar, who's considered to be the god of cricket. He himself was thinking almost he had completed one phase of his cricketing life. 25 साल का जो उनका करियर रहा है, almost 15 years back he was planning to quit cricket. And that would have been a very disastrous phase of his life if he would have thought of quitting cricket too early in his life. But there was a time when people were asking about his resignation. Critics across the globe, even Indian media was really mocking at him and his performance in the entire World Cup cricket. But yes, he had that self-belief, that self-esteem in him that stopped him to do that. विद्या बालन की अगर हम बात करें, she was body shamed. ये body shame काफी पॉपुलर टर्म है आज की फिल्म क्रिटिक्स और सेलिब्रिटीज के बीच. उनको काफी सारी बॉडी शेमिंग का सामना करा. द सेम ऑल्सो वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय लियोनार्डो डिकैप्रियो. विद्या बालन accepted the way she was. She accepted the roles which suited her personality, and see now she is one of the highly established and highly paid actors in the Indian cinema. Even Leonardo DiCaprio, he was not famous for his six-pack abs, but he made himself famous by his acting, by his honest dedication to the Hollywood cinema. And he has been garnered, or he has been awarded a lot of awards, right? From BAFTA, Oscar, you can say a lot of international awards and fame he has acquired. Most of his films have grossed more than 7.2 billion US dollars. And he was ranked as the 8th most highest paid Hollywood actor. So you can just see the quality that he has given in his life, in spite of a lot of difficulties, in spite of a lot of difficult challenges which these people had gone through. So self-esteem is one of the most important factor which keeps you motivated, which keeps you growing in your life. That's one thing. In spite of critics, in spite of all the drama that encircles you, your self-esteem is one of the most important part, right? Negative thoughts harm us more than help us. So it is rightly said. Even Jim, I think his name is Jim Rohn. Yeah, he also says, the walls we build around us to keep sadness, but also keeps out of the joy. Even Mr. Ratan Tata says that iron, no one can destroy iron. लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, बट लोहा खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाता है. बाय द वे ही इट स्टार्ट्स रस्टिंग. मतलब लोहा खुद ही अपने आप में जब जंग खाना शुरू करता है तो वो खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है. लोहे को कोई तोड़ नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती, खराब नहीं कर सकती, बट लोहा खुद ही अपने आप में. आप एक इमेजिन कीजिए कि आपके घर में कोई एक ऐसी लोहे की चीज है जो काफी सालों से यूज नहीं की गई है, तो वो पड़े पड़े उस पर जंग लग जाता है. गाड़ी का ही कोई पार्ट ले लीजिए, अगर आप उसको ऑयलिंग या उसको कभी आप पॉलिशिंग नहीं करोगे तो वो खराब हो जाता है, वो सड़ना शुरू कर जाता है. एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसका कोई काम नहीं रहता है, उसको फेंक दिया जाता है. जिंदगी की हमारी ऐसी ही लाइफ होती है. मतलब हमारी जिंदगी को अगर हम देखेंगे
तो अगर हम नेगेटिव थॉट्स में डूबे रहेंगे तो हमको कभी भी आगे बढ़ने की आकांक्षा नहीं होगी. वी विल ऑलवेज बी इन दैट जोन. We will not see the beautiful side of us. Okay, so that's one thing which you need to really understand. Now there is a very I have an interesting story to tell कि सेल्फ एस्टीम को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है. I'll talk in Hindi so that everyone understands. Okay, तो एक रेलवे स्टेशन होता है. वहाँ पे एक गरीब आदमी होता है, काइंड ऑफ beggar. So he sells पेन. ओके, वो पेन बेच के अपना गुजारा करता है. एक गरीब आदमी है जो काफी तकलीफों से अपना पेट पाल रहा है, छोटे छोटे पेन बेच के अपना गुजारा कर लेता है. तो एक दिन ऐसा होता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी, नौजवान, उससे पेन खरीद लेता है. और अगर उसको वो देख के उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि यार उसको कोई मदद करे हम. तो उस नौजवान को ऐसा लगता है कि यार क्यों ना मैं इस भिखारी की मदद करूं. तो वो क्या करता है कि वो उसको बोलता है कि भाई पेन, मैं अगर 5 पेन लेता हूँ तो उसके कितने पैसे होते हैं. तो वो बोलता है कि सर इसके 50 रुपए हो जाएंगे. तो वो 50 रुपए देता है, पर उसके मन में ऐसा आता है कि यार मैं शायद इससे ना ही लूं, ये गरीब आदमी, इसके पास कुछ नहीं है, तो एज ए हेल्प मैं उसको दे देता हूँ. और वो आगे निकल जाता है. जब वो ट्रेन में बैठता है, ट्रेन शुरू होने से कुछ 5 मिनट पहले उसके मन में ख्याल आता है कि देखो ये मैं भी व्यापारी हूँ और ये बंदा भी अपना काम कर रहा है. अगर मैं उसको पैसा देकर उसके काम की अगर मैं कीमत नहीं बताता हूँ तो उसको शायद उस चीज़ का ज़िंदगी में कभी एहसास नहीं होगा. तो उसके मन में पता नहीं क्या आता है और वो ट्रेन से उतरकर उस भिखारी के पास चला जाता है और उसको वो बोलता है कि भाई देख, तू भी व्यापारी है, मैं भी व्यापारी हूँ. यू आर ऑल्सो बिजनेसमैन, आई एम ऑल्सो बिजनेसमैन. सो आई वैल्यू योर सर्विस एंड दैट्स द रीजन वॉट एवर मनी आई हैव गिवन यू, आई वुड लाइक टू बाय दोस पेन. मतलब मैंने जो आपको पैसे दिए उसके रिटर्न में मुझे आप पेन दीजिए ताकि मैं आपकी मेहनत की दाद दे सकूं. आपके मेहनत की कुछ कीमत है, क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसकी जरूर कोई कीमत है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही पैसे नहीं देना चाहता. तो ये बात सुनकर वो भिखारी के मन में पता नहीं क्या आता है. उसको उस चीज का एहसास होता है कि ये बंदे ने बहुत बड़ी बात की है कि मैं भी एक व्यापारी हूँ, तू भी व्यापारी है. तो उसको उस व्यापारी का, उस बिजनेस करने का, उसके अंदर वो रियलाइजेशन आ जाता है दैट इस बंदे ने 2 मिनट में बहुत बड़ी बात कर दी. अब तक मैं अपने आप को गरीब भिखारी समझता था, पेन बेच के बस गुजारा करना है, बस 4 पैसे कमाने हैं. बट मैंने कभी उसके आगे कभी लाइफ को सोचा नहीं है, उसके आगे कभी जिंदगी को देखा नहीं है. आज मुझे इस चीज का एहसास होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक काम है, उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है, उसकी कोई उसकी कीमत है. मैं ऐसे ही कोई पेन नहीं बेच रहा हूँ. इस चीज का जब उसे रियलाइजेशन होता है तो वो उस प्रोफेशन को सीरियसली लेता है और फिर वो हर घर में, स्टोर में जाके उस पेन को बेचना शुरू करता है. कुछ दिनों के बाद वो पेन के साथ साथ और भी अलग सी चीजें बेचता है. लाइक फॉर एग्जांपल वो पेन के साथ बुक्स बेचता है, कैलकुलेटर बेचता है, जो भी स्टेशनरी रिलेटेड सामान है उसका वो व्यापार शुरू करता है. एक दिन ऐसा होता है कि एक मीटिंग में इस नौजवान को वो देखता है. एक बहुत ऐसी कॉर्पोरेट मीटिंग होती है. उस नौजवान को देखकर उसके बहुत अंदर खुशी आती है, एक उत्साह आता है और उस चीज का श्रेय जो आज वो है वो उस नौजवान को देना चाहता है. तो उस नौजवान के पास वो जाता है और उससे वो बोलता है कि साहब आपने मुझे पहचाना. तो उस नौजवान ने उसको जवाब देता है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना. तो वो उस सिचुएशन को नरेट करता है. ही स्टार्ट्स नरेटिंग द सिचुएशन. देन दिस पर्सन रियलाइजेस, यार हाँ, आप तो वही आदमी थे कि जो रेलवे स्टेशन के बाहर पेन बेच रहे थे. तो जब इस भिखारी ने, या जो अभी एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन बन जाता है, उस बात को दोहराया तो उसके अंदर वो एक रियलाइजेशन आया कि यस, कि आपने मुझे अपनी औकात दिखाई, मेरी वैल्यू दिखाई. एंड दैट्स द रीजन मैं आज जो भी हूँ, केवल आपकी उस 2 बातों की वजह से मैंने अपनी जिंदगी में उस सेल्फ एस्टीम को रियलाइज किया है कि मैं भी कुछ कारोबार कर सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो डू अ बिजनेस एंड आई कैन स्टैंड ऑन माई फीट.
today I have established myself in such a way that I have all the dealings, or I take corporate accounts. I manage corporate accounts by supplying them stationery products. And that's the reason I'm part of this meeting today. Glad to meet you, and thank you for making me realize that what I'm having a value and self-esteem in me. Okay, so that's the reason it helps you to change your perception about yourself. Now take a look at this image. Most of the cricket lovers will identify what moments I'm talking about. एक ही साल में इंडियन टीम ने एक फेलियर को, एक बहुत जबरदस्त फेलियर को एक्सपीरियंस किया, और उसी साल में इंडिया ने सबसे एक ऐतिहासिक जीत का भी अनुभव लिया। जब 2007 में इंडियन टीम वेस्ट इंडीज खेलने गई थी क्रिकेट, तो बहुत ही शर्मनाक हार से जब श्रीलंका के साथ उन्होंने मैच हारा, बांग्लादेश के साथ मैच हारा, तो इंडियन टीम की हालत ऐसी हो गई थी, उनके पास कोई उम्मीदें नहीं थी। क्रिटिक्स इनके ऊपर इतने हो रहे थे कि इंडियन टीम को लिटरली पूरा रीवैम्प रीशेप करना पड़ा। In 2007, the same year when India played the first ever T20 World Cup, it was a winning moment, and things certainly changed, and Indian team again regained its popularity and stardom. तो क्रिटिक्स को अगर हम सही तरीके से लेंगे तो उसमें हमारी सुधार हो सकता है. We can improvise. Now, Indian team went through such a difficult passage that most of the seniors during that phase, they stepped back. They didn't want to play the T20 World Cup, and that's the reason MS Dhoni and his troop got this opportunity and they proved themselves. So that's what you need to understand, that at times you need to make some difficult changes in yourself, difficult decisions lene hote hai, and that's the reason you taste the success in your life. Okay, so that's one thing which is very important. Now, how will you achieve your goals? To achieve your goals in life, whatever you want, whatever you have set for yourself, there is one major aspect, is that you need to set realistic goals for yourself. आपको अपने लिए एक achievable goals, जिसको हम smart goals कहते हैं, जैसे smart मतलब specific, measurable, achievable, realistic and time bound. तो ये smart goals आपके लिए आपको प्लान करने जरूरी है. You cannot keep juggling with your goals. Like एक गोल नहीं है, आपके पास 10 गोल है और आप एक बॉल की तरह उसको जगल कर रहे हो, तो आपको पता नहीं कि मुझे कौन से गोल पे कितना फोकस रखना है. बट इफ यू हैव वन स्पेसिफिक गोल इन योर लाइफ, तो यू कैन टारगेट दैट गोल इजीली rather than keeping too many goals and too many priorities for yourself. Then you will never be able to achieve your goals, right? Here are a few important tips which I would like to share with you to increase your self-esteem and self-confidence. First, you should not compare yourself with others. जब अपनी तुलना आप किसी और से करते हो, तो उससे बड़ा निर्दयता आप अपने आप से नहीं कर सकते हो. You never know कि वो अगला जो बंदा है जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, you never know what is his problem, what difficulties or what lifestyle he is going through. That's the reason it is good to learn from others' experiences, but it is not good to compare yourself with others. Don't focus too much on the things that haven't yet happened. उस चीज पे आप ज्यादा ध्यान ना दीजिए जो चीज अभी कभी हुई नहीं है. कभी कभी हम उसी चीज को हम ध्यान देते हैं जो चीज हुई नहीं है, और उस चीज पे हम ज्यादा फोकस, इसलिए सब सही कहते हैं दैट कर्म पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके नतीजे पर. You just have to do your work. You have to just follow what you can do religiously in a dedicated way. Don't wait for the result. Result will follow your hard work. Okay, but if you perform and just keep expecting that it will happen, then believe me, you will not get anything other than frustration. Then third, be thankful for those things you have. You just imagine, if you just see yourself and just visualize things, those people who are there in hospital, they don't have time for themselves. Look at those people who are there on the deathbed. They don't have even a single minute of assurity कि आज उनके पास वो समय है नहीं है. आप ऐसी परिस्थिति में अपने आप को डालने की कोशिश कीजिए कि आपको तब एहसास हो जाएगा कि
अभी जो मेरे पास समय है वो कितना कीमती है. The time that I have is almost, it cannot be purchased by any measures in the world, or any wealth. If even if you put the entire wealth of the entire world, you can't purchase your time which has lapsed, right? तो समय की कदर करना बहुत जरूरी है. Put yourself in the shoes of the person who has lost his business, who has lost his his happiness because of anything. But you have that in you. आपके पास समय है, उस चीज की आपको सच में कदर करनी जरूरी है. डोंट लिव टू प्लीज अदर्स. दूसरों को खुश करने में अपनी जिंदगी मत व्यर्थ गवाइए. यू कैन नॉट कीप पीपल हैप्पी. दैट्स द गोल्डन रूल इन लाइफ. Keep yourself happy, keep yourself motivated, do those things which you feel like doing without disturbing or harming others' sentiments. That's obvious. But at the same time, you have to ensure that whatever you're doing, you are enjoying the time, right? So don't do things just to please others. Do things that will keep your soul happy. Okay, so that's one thing which you need to understand. So let's watch a video and understand that how things, or rather I will say, when you talk about team work in life, अभी हम एक दूसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे जो है टीम वर्क के बारे में बात करता है. अभी हमने बस अपने आप की सेल्फ एस्टीम को लेकर बात की है, बट जब कॉर्पोरेट्स में आप काम करते हो, वेन एवर यू वर्क इन कंपनीज, यू आर नॉट द ओनली पर्सन वर्किंग इन द सिस्टम. आपको अलग अलग लोगों के साथ काम करना पड़ता है. यू हैव टू वर्क विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. And when you're working, when you are seeing as yourself as a performer, then I think you should watch this video, that how a team should perform and how you will be considered yourself as a team member, as a valuable team member. So let's watch this video, an interesting video. So I hope you have watched this video carefully and you have understood what this video means actually. So I'll just start with the presentation again. So yes, students, so what did you observe? You can just write it down on a piece of paper and you can do a kind of, we will discuss this in the slides. So in a team, when you talk about team, there are different performers or players in the team, okay? Someone is called as a performer who is performing and contributing to the growth and success of the team, ensuring the targets are achieved
and the team is always in a position to fulfill the goals and targets. Someone is also an effective doer, okay? Someone who just needs some sort of push, and they can do it and perform well, okay? The next one is less effective doer. They are not self-motivated. They just try to pretend that they are doing something, but they are not doing it. Then we have the potential troublemaker, right? So who's the potential troublemaker? We saw in the video that who's trying to stop or just trying to bully the team members. They are not contributing. वो कुछ करते नहीं है, बस टीम की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं. Suppressive लोग वो होते हैं who just try to ensure that कि अगर कोई काम चल रहा है उसमें रुकावटें डालना, उसको suppress करना, उसको रोकना, बस नाम के लिए दिखाएंगे कि हम टीम में बहुत काम कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट वो टीम की जो गाड़ी आगे चलती है उसको पीछे से रोक देते हैं, उसमें ब्रेक्स लगा देते हैं. उनका इंटेंशन वही होता है. सो दैट्स रीजन आप जब टीम में काम करते हो, यू नीड टू कैटेगराइज कि आप कौन से कैटेगरी में बैठते हो. डू यू वांट टू बी एज अ परफॉर्मर, you want to be an effective doer, you want to be a less effective doer, or you want to be a troublemaker or a potential troublemaker or as a suppressor. So ये वीडियो से आपको काफ़ी उस चीज़ की जानकारी होगी कि टीम में अगर ऐसे लोग होते हैं तो टीम का परफॉर्मेंस कभी भी आगे नहीं बढ़ता है. एक बंदा परफॉर्म करने से पूरी टीम की सक्सेस नहीं बनती है. टीम वर्क उसी को कहते हैं जब आप एकजुट होकर आप काम करते हो, यू परफॉर्म, and that's why it is called as a team, right? So that's the reason we would understand how can a team achieve its goal. आपको क्या लगता है टीम अपनी गोल्स कैसे अचीव करती है? How do you think the teams would achieve its goal? Now you would have a lot of ideas in your mind. That's we need to coordinate, we have to understand the goal, we need to set priorities, so on. And that's absolutely right. But let's understand that first point that you need to understand as a team is that you need to be a sensitive person. आप जब टीम में काम करते हो, जब आप टीम का हिस्सा बन जाते हो, सेंसिटिविटी इज अ वेरी इम्प्लिसिट, या वो एक ऑब्वियस सी बात नहीं होती है, उसको आपको समझना होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेंसिटिव होना क्या होता है. बीइंग सेंसिटिव टू जेंडर, आपके टीम में हो सकता है मेल फीमेल दोनों काम कर रहे हो, दे आर बोथ पार्ट ऑफ द टीम. So you have to be sensitive to gender. Respect each other. Different culture, tradition. अलग अलग ट्रेडिशन से आप लोगों को देखोगे कि वो अपने कल्चर के नहीं, वो शायद कोई और होगा. कभी कभी कंपनीज में अलग अलग कंट्रीज के लोग काम करते हैं, उसमें भी आपको उनकी कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करना होता है, उनके रिलीजन को, उनके कास्ट को रिस्पेक्ट करना होता है. यू कैन नॉट मेक फन ऑफ इट, यू कैन नॉट बी बायस्ड, यू कैन नॉट क्रिएट ग्रुपिज्म इन द टीम, राइट? नेक्स्ट, उनकी इमोशंस को. आपके टीम में जरूरी नहीं कि सभी एक इमोशंस के हो. कोई ज्यादा इमोशनल होता है, कोई ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा किसी को बैड एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं लाइफ में, तो दे नीड सम पुश फैक्टर. सो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टीम मेंबर्स इन a team, right? Different people, and you need to understand them. Once you start understanding these people, it becomes very easy for you to transact with them. उनके साथ काम करने में आपको इजी हो जाता है. टीम में काफ़ी फेलियर्स भी होते हैं. जब ऐसा नहीं कि सारी टीम में जब आप काम करते हो कि आपको सक्सेस मिले. At times you need to taste failures, you need to experience failures, but from that what you learn, how you can improve yourself, that's one thing which you need to take into consideration. Weaknesses होते हैं टीम में, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है. So as a team member, how can you help the team members to improve on their performance, guide them, motivate them, so that they can work on their weakness and that weakness converts into a strength. So that's one thing which you need to work on. The next part is of building or achieving your goal as a team member is building trust and equality in the team. This point is self-explanatory. So how can you build trust and equality in the team? So the first point is shared leadership. Now, whenever in a team is performing, there is always a leader. But if the leader is constantly just expecting कि मैं जो बोल रहा हूँ वो टीम ने करना ही चाहिए, if there is like a dictatorship model like Hitler, एक बार टीम सुनेगी, दो बार टीम सुनेगी, but बार बार टीम नहीं सुनेगी.
सबको अपना अपना कैलिबर पता होता है, everyone knows the process in and out. So at times you need to be a participative kind of leader. Team में shared leadership होनी चाहिए. Every person should get an opportunity to take some decisions. Every team member should get an opportunity to voice out their opinion. उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए. Defining norms and expectations. अगर टीम काम कर रही है, उनको सही डायरेक्शन में काम करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है. That is setting some norms and expectations that you have to perform this goal or you have to perform this task within the set time frame. ऐसा नहीं कि कोई काम दिया और उसको आप जब मन चाह काम कर लिया, ऐसा नहीं होता है. कोई भी काम होता है उसको आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना होता है. Then the most important part which keeps the ball rolling or which helps the team to perform better is effective communication. So if you are expecting that the team should go and sync together, work together in harmony, then communication plays a very effective role. You can see that on any, in any game as well. The captain, if he communicates properly, the team will ensure that the wickets are, the team is able to pick up wickets on regular time. The team members or the players are able to work in coordination, sync together properly to ensure that the team wins the match, right? So that's one thing which you need to understand when it comes to effective communication. Now, players in high performing team, what do actually, or what is a high performing team? High performing team is that team जो हर वक्त अपने goals और targets को achieve करता है. They exceptionally exceed the goals, right? That's why it is called as high performing team. Now, there are different categories of people who work in high performing team and they do a different role. Like for example, someone who does the thinking work. In thinking zone, there has to be someone who will do the monitoring and evaluation of the performance. Someone who is in the specialist category who can be considered as a subject matter expert. Someone would give an idea, would generate some idea, plant some knowledge, or he will create some idea. Ideation takes place. In the action phase is completely, they are into the action. That means they are the performer, rather we can say they are the implementers who ensures that whatever idea comes from the team members, it is implemented properly. And shapers, they give the right direction to the team's performance. Completer or finisher is someone who completes the task in a proper way. Then we have the people which can be considered, or they can be considered as someone who does the admin job or ensuring that they do the administration coordination work, ensuring that whatever support, the logistic support or support in terms of communication, sharing information, giving the right, suggestion at times is done from the people team. That is called as the admin team. That's why in any organization you'll have the HR, the admin team, the legal team to ensure that everything happens in the right periphery, the right framework. So that's the reason. So these are certain, you can say, categories that play an effective role in high performing team. Now, what is the benefit of having a high performance team in an organization? So everyone knows that अगर टीम को आगे, अगर कंपनी को आगे बढ़ना है तो टीम का काम करना जरूरी है. और टीम मतलब ऐसा नहीं होता कि डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग. देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, IT department, finance department, HR, admin, training, and many more, right? So they have to work, they have to collate, they have to ensure that things are done in conjunction with the organization's goals and objectives. So if you have high performing team, definitely it increases the productivity, customers' goals, and they are able to retain customers, they are able to keep customers happy. That eventually increases the productivity, improves the performance of the organization. Reputation and trust of the stakeholders. So if you're giving good to the customers, if you are giving them good services, good quality of goods and services, definitely the trust of the customers definitely enhances, or they rely on the organization. They want to be with the organization. Products and services improvises on regular basis. So
high performance team always sets the bar and tries to increase the bar whenever they take any new task in hand. तो पहले उन्होंने x level पे perform किया था, आज वो x1 level पे काम करेंगे. So that's the quality of having a high performance team. So obviously, whenever you are having a high performance team, the level of performance improvises, it doesn't come down, it goes up and up. So that's the reason it's one of the best way of having a high performance team, and productivity, the quality, everything improvises to a different level. Now you just think of if everyone must be using a cell phone or mobile phone. Earlier we used to have a very low level of data network, very poor quality. आज देखिए आप 4G यूज कर रहे हो, उसका स्पीड काफी बढ़ गया है. Coming days we will be moving towards 5G technology और भी faster rate of data speed आपको मिलेगा. क्या हम वहीं पे अटके हुए हैं? नहीं, जो 10 साल पहले थे. सब टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है. So in the same way, the companies are improving because they have high performance team. Technology is getting unleashed to the next level. It's because they have high level of performance team, or they have high performance team. So just understand, whenever you are working in a company, your expectation or the benchmark will always improve, or they expect you to increase the bar for your performance. So with that, I end my presentation, students. I hope you have understood the context well. Please try and understand this from a longer perspective, because these values that you are going to learn from this session is definitely going to help you in your future career growth and development. So I wish you all the best and see you in the next session. Please be safe and take care of yourself.